बहुत हो चुका, हर चीज की एक सीमा होती है। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के हैं, जिसने अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर लगातार दायर की जा रही नई याचिकाओं पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, अब सिर्फ उन्हीं याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कोई ठोस और नया आधार हो। इस फैसले का असर क्या होगा? क्या इससे काशी मथुरा विवाद प्रभावित होगा? क्या यह मामला देश के धर्म और राजनीति से जुड़ी बड़ी बहस को जन्म देगा? और आखिर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। क्या है पूजा स्थल अधिनियम 1991? भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद लंबे समय से चलते आए हैं, लेकिन 1991 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने भविष्य में होने वाले कई विवादों पर रोक लगाने की कोशिश की। पूजा स्थल अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य था कि धार्मिक स्थलों के स्वरूप को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखना। यानी जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का था वह हमेशा उसी धर्म का रहेगा। कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। इस कानून का अपवाद सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद था, क्योंकि वह पहले से ही अदालत में था। इस कानून के आने के बाद से कई विवाद थम गए, लेकिन काशी और मथुरा जैसे मुद्दों को लेकर अब भी कई संगठन इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नई याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, अब और नहीं। इस कानून को 2021 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब से लेकर अब तक इस पर लगातार नई याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन अब अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हर चीज की एक सीमा होती है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने साफ कहा, अब कोई भी बिना ठोस आधार के हस्तक्षेप याचिका दायर नहीं कर सकता। जिन याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी हुआ था उन्हें खारिज किया जाता है। मतलब अब सिर्फ उन्हीं याचिकाकर्ताओं को हस्तक्षेप का मौका मिलेगा जिनके पास कोई नया और ठोस कानूनी आधार हो। पुरानी बातें उठाकर कोर्ट का समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई नई दलील पेश की जाती है जो पहले नहीं रखी गई थी तो ही उस पर विचार होगा। कौन कौन है इस मामले में शामिल? इस कानून को बचाने और चुनौती देने दोनों के लिए कई बड़े संगठन और राजनीतिक दल शामिल हैं। पूजा स्थल अधिनियम के समर्थन में कांग्रेस, सीपीआई, जमीयत उलमा ए हिंद, AIMIM यानी कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इन दलों का कहना है यह कानून देश की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है और धार्मिक सौहार्द बनाए रखता है। पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ कुछ हिंदू संगठन, काशी मथुरा के याचिकाकर्ता। इन संगठनों का तर्क है कि अगर राम जन्मभूमि विवाद को कानूनी रूप से हल किया जा सकता है तो अन्य मामलों पर भी सुनवाई होनी चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने भी एक नई याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नए आधार पर मौजूदा याचिकाओं में हस्तक्षेप की छूट दी। केंद्र सरकार की चुप्पी, अब तक जवाब क्यों नहीं? अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार अब तक इस मामले पर चुप क्यों है? वरिष्ठ वकील विकास सिंह और निजाम पासा ने कोर्ट में बताया कि पिछली 8 सुनवाइयों में भी केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। केंद्र सरकार की इस चुप्पी से विवाद और भी गहरा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 जजों की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। क्या काशी मथुरा विवाद पर असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काशी और मथुरा मामलों पर कोई असर पड़ेगा? काशी और मथुरा के मामले अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम को वैध ठहराता है तो काशी मथुरा विवाद पर कानूनी रोक लग सकती है। अगर यह कानून रद्द हो जाता है तो इन विवादों को कानूनी चुनौती देने का नया आधार मिल सकता है। अगला कदम क्या? अब अप्रैल के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल अधिनियम को वैध ठहराएगा या फिर यह कानून असंवैधानिक घोषित किया जाएगा? अगर कानून रद्द होता है तो क्या भारत के धार्मिक विवादों का नया दौर शुरू होगा? सुप्रीम कोर्ट का सख्त रोक और आगे की राह। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर नाराजगी जताई। बिना ठोस आधार के नई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार अब तक जवाब दाखिल नहीं कर पाई। अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 जजों की पीठ इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। काशी और मथुरा विवाद पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करता है या फिर यह मामला और लंबा खिंचता है। Lord, there is something inherently appealing in the argument of the petitioner. Justice has been done. That's the first, my lord, point that certainly strikes a judge, that some injustice has been done and we must step in
and solve the problem. This is, my lord, the first. There are three limbs to the argument. This is the first, my lord. Prima facie looks very appealing that some injustice is being done to me. Why should not the court after? I will not go to that extent. Let me put it very clearly. Normally, as a court, there are two factors which play with us. One is to do justice, remedy the wrong. That's a factor. That's the instinct, my lord. That should and is No, should be but the instinct. if there is something wrong, let's not fix the remedy problem. wrong. Two is the courts like to normally assume a power because adjudicatory functions should not be curtailed. So, my lord, Not be unnecessarily curtailed until unless the statute specifically, expressly, or by implication takes away that power. So if I can summarize, my lord, the other side, there are three limbs to the argument. One is, if there is some injustice, court's power should not be curtailed. The court ought to, as a matter of justice, step in and fix the problem. This is proposition one, my lord, which itself I will say something on. Proposition two is, if that be the case, then maybe 34 does not have the word vary or modification. However, in order to, my lord, support proposition one, I will persuade the bench to read it in one of three ways. One is adding words, one possible submission. Second is read it in 34(1) as part of setting aside. Second possible interpretation, according to me, my lord, the one which we will have to deal with. And third, forget 34(1), let us read it in 151. So this is point two, my lord. So point one is the court should have the power. Point two is, if the court has the power, these are one of three methods to do it. And three, realizing there's a problem with an untrammeled power, we realize there's a problem that there cannot be untrammeled variation. Guidelines have been suggested by various parties in various different ways. Possibly all of them, my lord, suiting their particular facts of the case. So everybody has their own, my lord, guideline, which perhaps will fit whatever factual background that particular individual has to place or perceived injustice. Lord, we are in a position, my lord, as the learned solicitor, my lord, we are not here on any particular set of facts. There are weighty arguments. You are appearing for whom? My lord, I am appearing for UNCITRAL, UNCCI, my lord. We have intervened as UNCITRAL. There are weighty arguments, my lord, which have been made on the other side, no doubt, my lord. But I will just, my lord, I think we should step back a little, because I think, my lord, we are proceeding on a bit of a misconception, which is this. My lord, we are treating this as an appeal from a judgment. In our mind, my lord, in the court's mind, that the thinking is that this is in some way an appeal from a decision by a inferior court. And, my lord, there are at least, I'll attend them, my lord. My lord, there are at least 3 or 4 aspects which your lordships will consider before coming to the next question is, when can you attack an award? So, my lord, what is critical here is that an award is a baby of a private dispute. It is supposed to be out of the system. It is not supposed to be in the system. It is supposed to be out of the system. There are some implications here. My lord, an award is meant to be final and binding. Very important. It has to be final and binding. It is a consensual process. The moment the arbitrator finishes, his mandate gets over. Consent is over. Subject to, of course, correction and remand. The mandate is over under Article 32. The arbitral tribunal becomes functus officio. So, my lord, there are 2 policy aspects to an award which are not there in a lower court judgment. One is party autonomy, and I'll explain what is the relevance, because I think this is crucial. And secondly, my lord, finality.
You go into arbitration. Nobody is forcing you, my lord. We have to proceed on the basis that nobody is forcing you to go to arbitration. It is a consensual process. The consequence of this, which has not been, my lord, probably appreciated by the other side, is an arbitrator can be wrong. An arbitrator can be wrong on the merits. He can be wrong on his appreciation of evidence. He can be wrong on the interpretation of law. But the law provides that because I have gone to somebody else other than the courts will never tolerate a wrong order. But I have gone to somebody else, I will take that wrong decision because I want finality. I want a binding award. Therefore, my lord, 34 is restricted, that it has to be at the level where there has to be patent illegality. So, my lord, the first point I want to make is, please do not consider this as an simply, my lord, the intention is to keep it out of the courts. So, my lord, however much the instinct is to render justice, that justice has not to be rendered by the court, but that justice has to be rendered by the tribunal. Where your lordships are eager to fix the problem, the first proposition, the law provides and the statute provides that that is a remedy available to the tribunal. And opportunities are given to the tribunal in every stage. A lot award comes if there is clerical, etc., mistake. Then under the old act, section 15, which your lordship was referring to, it went to the court. But that is no longer the case. Section 33 is qua the tribunal. Please keep tribunal on one side, court on one side. 34(4), again an option. Surely the court could have intervened and said, I'm fixing the problem. No, the intention of the law is save the award, go back to the tribunal under 34(4). No, I'm not on the scope of 34(4). Go back to it. No, the third option. Why is setting aside so critical? Not because of essentially, why is modification not provided? Because of the problem of cherry picking. If you actually believe, if you really believe that that tribunal has messed it up, that it has not followed natural justice, or it has gone completely outside the jurisdiction, or it has made such an obvious patent blunder, why should you trust the tribunal's judgment on other points? I give a simple example, and it happens every day. 5 claims are made. 4 are rejected. 4 may be wrongly rejected because it may have been in appeal reversed, but 4 are wrongly rejected. There is no 34. The 5th claim is allowed, but even there the arbitrator commits a mistake, maybe on the overhead or A, B, C, D. If the court tweaks, let us say 5, what is the consequences? You are cherry picking one part of the award. The person who has actually lost, in a sense, because 4 of his 5 have been wrongly disallowed, has no remedy because he accepts the wrong judgment of the arbitrator. So, my lord, when your lordships come to a conclusion of patent, it's a very serious matter to set aside number. When your lordships come to the stage of patent illegality or the stage of setting aside cannot be the norm. Then, because of the seriousness of the matter, the set aside follows because your lordships have lost faith in the tribunal. It is not an appeal where your lordships will modify this, change this. So, this is my first. If he has not challenged the rejection of the 4 claims, my lord, he may have not been able to challenge the rejection of the 4 claims because even though it is wrong. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।